हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हाँ, मैं आपके नॉट योर एवरेस्ट ट्विंस मैं हूं शिवम और मैं हूं हर्ष। आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं टॉप 5 स्केरी घोस्ट कॉट ऑन कैमरा। आई मीन लास्ट टाइम हम लोगों ने जब ये रिएक्शन किया था काफ़ी टाइम हो गया तब से, और हम लोग ये सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये वही हम लोग का पुराना चैनल टॉप 5, क्या चैनल का नाम है? टॉप 5। चैनल का नाम भूल जाते हैं बार बार। न्यूक्स टॉप 5, यस। तो ये सबसे अच्छी टॉप 5 वाली वीडियोस अपलोड करता है। एंड पिछली बार भी हम लोग ने करी थी। हाँ, पिछली बार भी इसका मतलब वीडियो काफ़ी अच्छी रही थी। तो हम लोग आज इस पर रिएक्शन करने वाले हैं। एंड देखते हैं, लास्ट टाइम वाली वीडियो में हम लोगों को 2 वीडियो समझ में आई थी। उन 5 वीडियो में 2 वीडियो थोड़ी सी चिल्ला दी थी हम लोगों ने। तो वो 2 वीडियो का थोड़ा सा रेलेवेंस लगा था कि हाँ यार, अगर यहाँ पे इसने कुछ नहीं किया तो किसने क्या किया, मतलब कि हाँ भूत आए तो आया कहाँ से। तो आज ये देखते हैं कि आज की वीडियोस कितनी रेलेवेंट होती हैं। एंड उसी के साथ साथ हम लोग आपको ये बता देना चाहेंगे कि हम लोग इसकी एक प्लेलिस्ट बना के रखे हुए हैं। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो चेकआउट कर लीजिएगा अदर रिएक्शन के लिए। और साथ ही साथ इसके चैनल को जाकर के भी लाइक कर दीजिएगा, इसका चैनल बहुत ही बढ़िया है। एंड एक सब्सक्राइब भी दे दीजिएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। Nuke's top 5. Top 5 ghosts caught on camera. Seance Witch. Paranormal investigator Brad Mack and his team were investigating a place called The Cage in a little town called St. Osoph in England. The town and the site has a dark history. Starting in the year 1582, this building was used as a prison, but not just any prison. The jail was used to confine and execute women convicted of witchcraft. Brian Mack says that during his paranormal investigation, his team heard strange footsteps and whispers. They saw lights flicker for no reason, and they even felt something bite or pinch them on several occasions. One member of their team, named Vanessa, was so shaken that she absolutely refused to stay in the building after dark. The most bizarre incident was yet to come. Late that night, the group decided to perform a seance to contact the ghosts of the convicted women who had died there. As Brian Mack watched and recorded from another room, he saw something very strange happen to a woman in the group. Her face has completely changed. Doesn't even look like a person. इतना लंबा चेंज। Right, अभी Debbie, ये you come पूरा down ऐसे here हो for a गया। minute, please. हाँ, Weird. My husband. Her face has completely changed. Doesn't even look like a person. भाई यहाँ Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. यहाँ से लेकर के और जोकर वाला इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये लोग उस समय One seance member's face actually begins to change and contort into something that can only be described as horrific. Her nose seems to grow and her mouth stretches into a bizarre, inhuman grin right in front of their camera. Fearing for the woman's safety, they call down and remove her from the group. After the seance, the woman has a strange burn mark down the back of her neck, even though she had been dressed in several layers of clothing. She later said that after the incident, she experienced horrible nightmares and bizarre occurrences around her home. So, was this some supernatural possession by a ghost caught on camera? Or just a bizarre trick of the light? Let me know what you think down in the comments. तो हर बार इसी पे डाल देता है। What do you think? आप क्या सोचते हैं? The Vickers Hill Ghost. The city of Armagh in Northern Ireland has a grim and ghostly past. The city is one of the oldest in Ireland and is believed to have been an ancient pagan ceremonial spot. The site of Vickers Hill in Armagh is said to be one of the most haunted areas of the city, home to the infamous Green Lady Ghost. In this clip, a woman driving her car on Vickers Hill doesn't see the Green Lady, but does catch a strange supernatural encounter all her own. The man in the video seems to walk across the road and disappear right into a wall that surrounds the Church of Ireland Cathedral. He seems to be dressed in Georgian fashion, a style of clothing that hasn't been worn in the city for over 200 years. Singapore Highway Ghost. Oddly enough, this next video was posted to the Singapore road safety site, roads.sg.
a site which अच्छा। usually posts videos and हाँ information वहाँ की about ऐसी Singapore वेबसाइट traffic. .sg लगा के जॉब Post shows वाली someone driving on a busy Singapore highway late at night when they spot Highway something पे post- very unexpected या in the plug middle of the road. क्या देखा वहाँ पे? उल्टी चल रही थी कार। नहीं उल्टी? नहीं नहीं कार उल्टी है? लग रहा। अब यहाँ बैक साइड तो लग नहीं रही है। रुको रुको कुछ और भी हो सकता है। Did you see the ghost? हाँ अभी ये था ना? नहीं रिप्ले करो भाई। The car caught the image of the girl Uh-huh. in both its front and rear dash cams. The story was picked up by several online tabloid हाँ हाँ sites, उसके ऊपर and खड़ी थी some ना। viewers हाँ, जो बीच में suggested that divider the है girl उसके seemed to ऊपर। be हाँ, ये। floating in the road. Now, to me, it actually looks like a girl balancing herself on the divider in हाँ, the middle of a balancing very सही बात। dangerous highway, which is pretty bizarre either way. सही बात है what अगर do you रियल भी think? है मतलब Is it just तो a भी साला dangerous अजीब होगा। balancing act, or is it a ghost caught on camera? Let me know down in the comments. वैसे कोई लेडी होगी तो ऐसे Ghost क्यों हाँ कर रही रियल है? में अगर है तो Workers at the Bank credit ghost. bank BCP in Peru were hanging out after business hours having a chat as one of Maybe them Peru tested जाना out the चाहते हैं camera पर- on his new phone. अच्छा। Suddenly, he catches something very strange in the background of the video. Sí, pero lo que pasa es que ese es el mongol de Alonso, que es media bestia es. Oye, yo te diría, pero toda la vida con tu 50% no puedes hacer las cosas bien. उस तरफ का कुछ बैकग्राउंड ¿Cómo se quiere que la gente no quiere? कहाँ देखे हमें समझ नहीं आ रहा उधर ही देख रहे हैं Es por un nuevo incendio. Oye, 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 en la cámara, oye, en la cámara ये sale तो कोई pasando हो una भी niña सकता है corriendo. यार। He tells his workmate that he just saw the shadowy figure of a little girl run behind him. छोटी सी लड़की हाँ गई। हाँ, नहीं ये तो Sale pasando ahorita una niña corriendo. Oye, la niña que llora. पॉसिबल नहीं है Oye, te juro que en la cámara que pasó लेकिन ahorita. इन लोगों ने ये His कहा था कि co-workers यही लोग don't seem हैं to believe him, so the man goes to check, but nothing there. Footage from a second course. bank security camera shows the bank's front Ah. doors seeming to open, भाई अब थोड़ा सा बात समझ में आई and then close, all on their own. तो एक बात ये नहीं समझ पहले में ये आई। दिखाया कि यहाँ बंद हुआ खुला हाँ। फिर वहाँ कुछ दिखा। वो बाद में एक बंदा चेक भी करने है कि साला ये ऑटोमेटिक कैसे खोल रहा है Secret swimmer. द सीक्रेट स्विमर Kim Davison and her friend Jessie took their children swimming at Lockyer Creek in Queensland, Australia. At one point, Kim's daughter claimed that she felt something grabbing her leg, but her mom thought nothing of it, assuming the girl had just brushed up against a stick or some other piece of debris floating in the water. ये ना बोलो घसीट ले गया Later, Kim took a photo of herself, Jessie, and their 3 children splashing around in the creek. But when Kim looked back at her photo, she saw something that chilled her to the core. There appeared to be a 4th, ghost child, swimming right along beside them. After the strange photo was posted to Facebook, the story became even creepier. One viewer did a little digging and discovered that a young girl named Doreen O'Sullivan had drowned at that exact spot 100 years earlier. 100 साल So पहले। is this just a strange reflection in the water? 100 year earlier Or is this little मतलब Doreen every day O'Sullivan's ghost viewer ने caught on camera? बताया कि उसी रिवर में ऐसा हुआ था। ए भाई यार इसकी वीडियोस यार हमेशा ऐसी होती हैं जैसे मतलब 100% सारी वीडियोस तो नहीं आपको हाँ। कि इन्वॉल्व कर सकती हैं बट कुछ वीडियो आपको सोचने पे डाल देती हैं कि आपको मतलब कि अगर उसकी कुछ हिस्ट्री थी उस जगह की तो उस जगह से रिलेटेड क्या हो सकता है। आई मीन सी वाले का तो जो रिवर वाले का हम लोगों ने तो पूरा देखा ही कि इसकी 100 साल पुरानी हिस्ट्री है और उसके बाद लड़की जो है उसमें गिर के मर हाँ कि वो उसने पहले मतलब उसने बोला कि मुझे कुछ फील हो रहा है बट उसकी मॉम ने सोचा कि ऐसी कोई लकड़ी वगैरह 1-2 वीडियोस लगा कि हाँ फेक हो सकती एक वो हाईवे वाली हाईवे वाली। हाँ हाईवे वाली नकली नहीं हो सकती। आई मीन नकली नहीं हो सकती का मतलब ये नहीं कि घोस्ट ही 100%। हाँ एक रियल लाइफ गर्ल हो सकती है वहाँ पे। हाँ ये भी हो सकता है कि वो उस टाइम रोड क्रॉस कर रही हो गाड़ी निकल रही हो। अबे लेकिन बाहर कंट्रीज में ऐसे क्रॉस नहीं होता मतलब बहुत ही वियर्ड माना जाता है। जे वॉकिंग क्राइम है वो एक
जैसे यहाँ तो हाँ common लेकिन है। अच्छा ये भी है कि अगर वो ऊपर खड़ी थी तो कार जाने के बाद वो उतर के आगे बढ़ हाँ, जाती वो है। बैलेंस क्यों कर रही थी? वो आगे भी नहीं बढ़ी, वो बैलेंस कर रही थी, यहीं खड़ी थी। एक वो था, और तुम्हारा क्या कहते हैं जो वो वाला था, वो वाला तो काफ़ी ऑब्वियस था, बैंक वाला। हाँ। बैंक वाले में तो एक शैडो जो निकली थी, हमें लगता है कि वहाँ के रहे हुए लोग भी प्रैंक ये कर सकते हैं। तो आप बताइएगा कि आपको इन 5 वीडियोस में से कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगी और लगा कि हाँ इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। और अगर आप इन वीडियोस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानते हो, स्पेसिफिक वीडियो मतलब उन 5 वीडियोस में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताइएगा। हम लोग ये वाली वीडियोस पर वीक, एक वीक में मतलब एक बार लाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम ये वीडियोस पाने के लिए नीचे जाकर के लाल बटन है उसको दबा दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।